फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik. I'm very excited for IPL to begin, and within a week's time, IPL 2024 will begin. But you know what's more interesting? The most interesting part is that right after IPL 2024, we'll get to see T20 World Cup. And obviously, it's T20 fever now. Right now, we are seeing WPL, then IPL, and then T20 World Cup. But along with the IPL preparations and T20 World Cup preparations, there's a very important thing for all of us to discuss and to think about. And that discussion is around T20 World Cup squad. Now, obviously, there are a lot of players who will be there in IPL and they'll be putting up a great show. But obviously, all players can't go to the T20 World Cup. So, I have got with me Taus Rizvi and Sahil Malhotra today to discuss that how and what kind of preparations we can do during IPL so that we get a match-winning T20 World Cup squad. Sahil, now everybody's waiting for a trophy, so it's all important for us to know what Team India needs from IPL 2024. Well, Sahil, if we look at Team India, a lot of players are there. Rohit Sharma will be there. Yashasvi Jaiswal, great opener. Rinku Singh has done really well in IPL. Surya Kumar Yadav led T20 team in the T20 series, the two series that happened after the ODI World Cup. Now tell me, what all spots are remaining and how Team India can fill those spots during the IPL 2024 campaign? I think first and foremost we need to figure out our fast bowlers for the T20 World Cup, because right now, except Jasprit Bumrah and Arshdeep Singh to a certain extent, I can't really think about bowlers who can kind of fit in that role and give you penetration with the new ball and give some control in the final few overs too. Now, if Hardik remains fit and available for the entire duration of the World Cup, so Hardik will be my one seamer, Jasprit Bumrah will be my one seamer, but I still need one more seamer who can give me, as I said, penetration at top and control towards the end. So we need to figure that seamer out, whether it will be Mohammad Siraj, whether it will be Arshdeep Singh. Now that kind of remains to be seen, who we kind of want to pair with Hardik Pandya and Jasprit Bumrah. So that's going to be one big call, because they'll be drop-in pitches at wherever India are going to play. Even in New York, a drop-in pitch will be used. So expect a lot of runs on those pitches. So you need a lot of control as far as fast bowling is concerned. And I think I will definitely be looking out for the likes of Akashdeep, Mukesh Kumar, Mohammad Siraj, Arshdeep Singh, as in how they kind of shape up for that during the IPL, and even Shardul Thakur. So for me, I think the door is kind of open for every fast bowler right now. And Shardul particularly, yes, because Chennai Super Kings, MS Dhoni, he can probably bring the best out of Shardul Thakur. I think Shardul didn't get enough opportunities in his last couple of franchises. I think KKR kind of underutilized him both with bat and ball. So I hope there is some course correction when it comes to Shardul Thakur in the IPL, and he's riding high on confidence. Scored runs in the Ranji Trophy, picked up crucial wickets too, can vary his pace to good extent. So I think he could be the bowler to watch out for in the IPL. I'm still not sure about someone like a Deepak Chahar, because considering the amount of injuries he has had and the history of breaking down during a spell after a spell, I don't really have too much confidence in him. But I think Arshdeep, Mukesh, Akashdeep, Siraj, Shardul, these will be my few seamers, I'll be keeping an eye on. So seamers are my first priority. Okay, seamers are your first priority. Taos, I think a lot of names Sahil has already mentioned. But apart from Jasprit Bumrah, if I give you options, like two options to pick, who all you will go with? Because Sahil mentioned Arshdeep's name, Mukesh's name, Akashdeep's name, not many seamers name. तो बुमराह के अलावा कोई दो पिक करने हो तो कौन करोगे आप? No, for me, like Mukesh is completely out because he's very expensive and he's been exposed completely. Yeah, very, very slow. I mean, doesn't have variations. I hope, it's a dream to have Hardik Pandya. I hope he plays throughout the tournament or at least take some gaps. So for me, it's like Hardik Pandya, Shardul Thakur, and Arshdeep Singh. Because Arshdeep Singh gives you certain kind of variety, left arm pacer, somebody who can,
I mean, the matter with him is still that no ball thing keeps on coming, it keeps on creeping, which starts affecting the board, and it will steal away a lot of wickets if he comes and takes wicket and then he bowls a no ball. So that is one thing that he has to work on this in this IPL, and I think he should avoid it bowling those no balls. So for me, it's like Bumrah, Arshdeep, Siraj to a certain extent, but then he has to become a bit miser, become a bit khadoos. And here is one good opportunity because I mean you saw what he did in the Asia Cup. He The can Asia change Cup. the Yeah, game. yeah, yeah. Yeah, he can change the game in like in a course of 1 or 2 hours. But then he has Hmm. to realize this is T20 cricket और आपको ज्यादा मौका नहीं Hmm. मिलता. आपको फर्स्ट स्पेल में ही सिर्फ 2 ओवर मिलेंगे और 2 ओवर में आप क्या कर सकते हो? You can't leak those runs. So I Hmm. mean we have good pool of talent. Bumrah, Hardik. I mean I hope he recovers. Yeah. सिराज, अर्शदीप सिंह. तो आपके पास बैकअप ऑप्शन अभी भी है, थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा है. Yeah. मुकेश इज कंप्लीटली रूल्ड आउट. शार्दुल, I mean, only if I'm convinced when he plays under Mahendra Singh Dhoni. The way he bowls, the kind of variety that he brings, and the kind of he has everything, but he doesn't realize his own potential. It's only Dhoni who makes him realize. So that is something Shardul will have to become on. Very smart, very sharp. He can still make it to the squad, but only if he Okay. realizes what kind of talent he is, how effective he can be, what kind of wicket taking abilities he has. He can be useful in the death overs. He can be useful in the mid overs. नए बॉल से ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा नए बॉल से, क्योंकि वो पेस नहीं है जो शार्दुल की हुआ करती थी. He would touch 140 at one stage. Now he's not touching. Obviously, he's getting older. So yeah, I mean he can be effective with the bat, with the ball, but for me, like these 3, 4 guys are enough. I'm a bit sad. I feel I have a soft corner for Deepak Chahar. I mean the way he swings the Okay. ball, cute swing. I mean he can be. He's second to Bhuvneshwar Kumar. When Bhuvneshwar Kumar was at peak, he was deadly. He was dangerous. He could talk with the ball. This guy has the ability, but then that negative point इसका यही आ जाता है यार, इंजर्ड हो जाता है बार बार. ही इज इंजरी प्रोन. अब वो मसला Hmm. उसको कैसे हल करना है, वो आईपीएल कितना सर्वाइव करेगा, दैट इज वन थिंग दैट आई एम Yeah. वरीड अबाउट. So these are the Hmm. core for me, at least bowlers. This is the pool that we should look at. And I wish there was Mohsin Khan also यार. What a bowler he is. But यार वो इंजरी Yeah. का एक मसला है. वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन Hmm. दे जाता है. We have to, I mean, beggars can't be choosers. So हमको जो भी है उतने में ही करना है. Hmm. But beggars नहीं है, by the way, हम लोग we have enough talent. I'm just saying this is the phase. No, we definitely have enough talent, Taus, but I think you have put your bet on two names. You completely mentioned two direct names, one Arshdeep and the other one Shardul Thakur. And Shardul Thakur will also give you batting depth that you mentioned while you were making your comment. Now, Dharmendra, we're just talking about, IPL will be a great stage for the Indian team to pick and choose players and make a match-winning T20 World Cup squad. Now, Sahil mentioned that the immediate need for Team India is to sort out their best pacers. We have Jasprit Bumrah with us. Obviously, there is no doubt about Bumrah. Apart from Bumrah, who? So, if I give you two options, that who will you be eyeing in this IPL 2024 to take to a T20 World Cup? Who those two pacers will be? Taus mentioned Arshdeep and Shardul. What are your choices? I think the third name, just like Taus took like Deepak Chahar. I would go with Deepak Chahar rather than Shardul Thakur or in fact Arshdeep ने भी बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है, he is young और वो आगे मैच्योर करेंगे, लेकिन अब क्या है ना कि आपके पास T20 बहुत ज़्यादा, अब जैसे हम तो कह तो रहे हैं कि पूल टैलेंट और पूल बहुत है, और जो हमारा टॉपिक भी आज है ना कि आईपीएल, एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको 1-2 सरप्राइज आईपीएल से निकल के आएंगे. जो हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, बुमराह तो फिक्स है ही, सिराज भी टी20 में उतने मतलब इफेक्टिव नहीं लगते नजर आते हैं. अच्छा, मैं एक्चुअली साहिल से भी जानना चाहूंगा कि मोहम्मद शमी के फिटनेस का क्या स्टेटस है, क्या वर्ल्ड कप से पहले फिट हो पाएंगे, क्या ऐसा कुछ है उनके चांस? नहीं ना? नहीं धर्मेंद्र, वो he will be fit most likely for the home test series after the World Cup, which is against मतलब उनका तो Bangladesh, New Zealand. Yeah, so World Cup abhi they are not looking at Shami for World Cup. They are saving him probably for Bangladesh test, New Zealand test, and then the important Australia series, 5 test matches.
सो आई So थिंक Abhi they will not. आवेश खान पे भी नजर रहेगी, अगर आवेश खान कैसा वो करते हैं, आवेश खान कुड बी अनदर ऑप्शन। सो क्योंकि देखिए मुझे जैसा लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह का अर्शदीप का परफॉर्मेंस भी अब तक का रहा है, जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट किसी एक दो ऐसे यंग टैलेंट की तरफ भी देख रही होगी, जो कि मुझे लगता है कि वही आईपीएल में आपको ऐसे कोई प्लेयर, एकदम से कोई प्लेयर अचानक नजर आएगा जिसका हम आज नाम जिसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो एक दो फास्ट बॉलर ऐसे आ जाएंगे बीच में जो इसको ऐड करेंगे। और बाकी तो जो हमने जो जिस ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं वो तो रहेंगे ही, दो तीन इसमें रहेंगे, एक दो बैकअप के तौर पे मुझे लगता है कि शायद निकल के इस आईपीएल से ही आएंगे। Hmm. That can be a case, Dharmendra, but I think the two, three names that Taus, spoke about, and obviously Sahil mentioned, I think those will be the pacers who will remain in selectors' eyes the most during IPL 2024, and those are generally the quality pacers that we are seeing over the years also. So once Arshdeep and Shardul's name was taken, so let's see what will happen. But that's one front where Team India really needs to work, and they really need to figure out who will be their best pacers to take for the T20 World Cup. But as we were talking, Sahil, about the pacers, you mentioned Hardik Pandya's name as well. And that takes me to the point where we really need seam all-rounders. और मुझे लगता है इतनी बात किसी और ने नहीं करी होगी जितनी ताउस ने करी होगी। इन ईच एंड एवरी लाइव सेशन वो सबसे ये पूछते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या को कुछ भी हो गया तो पेस ऑलराउंडर कहाँ है, कौन होगा? So Sahil, if not Hardik Pandya, then who? No one. There is no one. We have been like going round Okay. and round regarding this, and I think the impact player rule has kind of restricted our hunt for seam bowling all rounders, because you won't see someone like a Venkatesh Iyer, Shivam Dube bowling for their franchises now, because the impact player rule gives every captain an opportunity to play a specialist bowler or batter. So Yeah. the whole problem of not finding those seam bowling all rounders is likely to continue. And the situation we were in during the 2023 World Cup, where it was just Hardik and the rest. We did try Shardul, right? But we all kind of saw what kind of happened with that Shardul experiment. That experiment just didn't work. So I hope Shardul finds his mojo back. But other than, and even Shardul is a bowling all-rounder right now. You just can't trust his batting abilities as much as you could do with Hardik Pandya. So unfortunate, but you don't really have any option ready apart from Hardik Pandya. So the only way India can balance that out is by beefing up their spin bowling all-rounders, because they have a lot of depth there. So you have Yeah. likes of Akshar Patel, Ravindra Jadeja, Washington Sundar to choose from. I don't really know how many spinners India can carry in a squad of 15, because you need one leg spinner, you need one left arm spinner, you need one off spinner for variety, and then you need one backup. And you also need a backup for a wicket keeper, you also need a backup for a batter. So in a squad of Yeah. 15, I don't see them, carrying a lot of spinning options. But Ravi Bishnoi, Washington Sundar, Aksar / Ravindra Jadeja, I think these are the four spinners which come to my mind, and all three of them, except Bishnoi. Even Bishnoi can hit it a long way on his day. But I think Bishnoi ko agar aap hataoge to Washi, Aksar, Jadeja, they are like proper spinning all rounders. So that is how you can kind of bridge, you can that kind of fill that vacuum if at all it is created by the absence of Hardik, if at all it happens. But other than Hardik, I think spin bowling all rounders are going to be your best bet. You only have to rely on them. Okay. No option. Sahil, I'll definitely ask Shivam Dubey's case to Taus, but I want to know a quick take from you as well. Last season we saw how Shivam Dubey batted, and over this past 1 year we saw the chances that were given to him. So don't you think that Shivam Dubey will also be a good player for this selection? He will be, but Suramya, the question right now is, when with the oldies kind of coming back, with Rohit coming back, talk and speculation around Virat continuing, KL Rahul putting his hand up for the middle order role, that is going to bat for LSG in the middle order and keep wickets. Then you have Rishabh Pant, who has become available for selection. You don't have many spots left, right? So where will I'm all for Shivam Dube, because he can hit the ball a long way, takes the spinners on, got lovely reach. I think probably right now in this Indian team, he has better reach than most. I'm just not saying because of the height, but just because of his game. He gets that he covers those extra inches with his good follow through and all those things, and reminds you of Yuvraj Singh in full flow. It's a big comparison to Yeah. make, but I certainly get those comparisons when I see him bat in full flow. But how can you? I still don't see him making the squad, because you have a Rinku Singh to accommodate. Where will you accommodate a Rinku Singh? You have a Surya Kumar Yadav, you have a Rinku Singh. Virat, if he's available, he's doing well in the IPL. He's your certainty at number 3. You have Rohit and Yashasvi Jaiswal at the top 2 positions. I don't see a playing 11 spot for Shubman Gill. Matlab, abhi, the way
जिस तरीके से ये करवट लिया है ये सिलेक्शन डिबेट ने, हम लोग सोच रहे थे यंगस्टर्स खेलेंगे. सो द मोमेंट विराट एंड रोहित वर बैक इन द मिक्स, केएल इज अगेन बैक इन द मिक्स, I don't even see a spot for Shubman Gill in the 11 right now. So Shivam Dube, needs to have a bumper IPL and needs to have certain spots up for grab. Even if you score runs, likes of Shivam Dube, Tilak Verma, even Ishan Kishan, they just aren't any available spots right now. Unfortunate, but it is what it is. I hope the transition actually begins now, because we have been waiting since 2007 to find new T20 players, but we just keep seeing the same faces. Last दो edition के आपको majority of the squad, I can name majority of the squad will be retained for this edition too. Majority of the squad. Just एक दो changes इधर उधर होंगे और आपको दिखेगा कि ये तो वही ऑस्ट्रेलिया वाली 11 खेल रही है एक तरीके से. Well, that's something that we really don't want, Sahil, but It's going perhaps to that'll happen, be the case. unfortunately. Yeah. Unfortunately, that'll be the case. That was शिवम दुबे के बारे में बात करते हैं. शिवम दुबे बहुत समय तक कोई चर्चा भी नहीं थी शिवम दुबे के बारे में. He was a player, a decent player. Okay, then came these 2 seasons of IPL, especially the last one, the 2023 season, जहाँ पर शिवम दुबे became the शिवम दुबे. उन्होंने जो किया, everybody was like कि यार ये कैसे कर दिया. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ही इज विद सीएसके, तो वो जो एक कनेक्शन होता है ना कि एमएसडी डिड समथिंग विद शिवम दुबे, ही इंस्टिल्ड सम कॉन्फिडेंस इन हिम, और ही इंस्टिल्ड सम पावर हिटिंग इन हिम, एंड शिवम दुबे वाज मैच विनर फॉर सीएसके for quite a few matches last season. Now it will depend a lot how he will play in this season. So let's just take an example जहाँ पे हम मान लेते हैं कि शिवम दुबे बहुत टेरिफिक तरीके से ये आईपीएल खेलते हैं. उसके बाद क्या उन्हें जगह मिलेगी या नहीं, गिवन जो चीज साहिल ने कही कि बहुत सारे जो ओल्डीज हैं और द एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दे विल आल्सो बी देयर इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड. सो अगर शिवम दुबे का बहुत शानदार सीजन हो जाता है, क्या उन्हें 15 में जगह मिलेगी या नहीं? See, first of all, I would love Shivam Dube to get back to his original self as a bowler. I mean, he was उनका पहला जो सीजन था, लास्ट सीजन, अगर आपको लग रहा है कि लास्ट सीजन में वो आके सुपरस्टार बन गए, या इसके पहले he has played for India, और उसके पहले मुंबई, एंड मुंबई में I mean he has improved as a cricketer right now. I mean he's realized his potential thanks to Mahendra Singh Dhoni once again. क्योंकि this guy was a limited player, he only knew how to hit those shots. जैसा अब अभी खेल रहे हैं, now he knows exactly how to rotate strike as well. So he's matured as a cricketer, and that is how it should be. I mean, you evolve as a cricketer, you learn your game. When you grow, when you reach that level, when you play IPL, when you play international cricket, you realize. I mean, last series, international series, if you saw Shivam Dube, he was not just hitting sixes; he was playing shots against fast bowlers, which was his weakness. Rotating strike, that was his weakness. He couldn't, he would know only how to hit the ball in a long way. And also to his credit, that he's got that range, he's got those skills, he's got that brute power, so he can change the game from any situation. I mean, I wouldn't even count Rinku. अगर कोई situation, ऐसा particular situation आया कि यार game change करना immediately, this guy can do it. Rinku is a match winner. He's going to have some tough competition with Rinku Singh. Rinku Singh is way ahead because he's been consistent for Team India, and he's a super fielder. अगर ये बंदे में फास्ट बॉलिंग, उसका स्किल्स जो होता, अगर he had an extra bit of yard of pace, he would have been instrumental. He would have been giving competition to Shardul Thakur, but unfortunately he's restricted himself to be a batter. अगर वो थोड़ा वेरिएशन एज अ फास्ट बॉलर आ गया, या एटलीस्ट कटर्स डालने लगा, या मिड ओवर्स में, तो ही कैन बी इफेक्टिव. बट या अभी के लिए इनकी जगह तो नहीं बनती है, क्योंकि रिंकू सिंह है, उसके बाद आपके पास बाकी ध्रुव जुरेल, यू काउंटिंग ध्रुव जुरेल, आई मीन फॉर मी इट्स ध्रुव जुरेल, बट जितेश शर्मा इज आल्सो देयर. जितेश शर्मा है वो ऑर्डर में, आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास आई मीन काउंटिंग सूर्य कुमार यादव. ओल्डीज, आई मीन साहिल की बात ले ले तो ओल्डीज आर बैक. आई डोंट नो व्हाई आर वी गोइंग बैक टू विराट कोहली. रोहित शर्मा ठीक है, समझ में आती है बात, बंदा फॉर्म में, बंदा कर सकता है और कम बॉल में रन मारता है. विराट कोहली सी T20 क्रिकेट में आप स्ट्राइक रेट और आपका ये बॉल, आपका रन्स जो है वो सेम इसमें नहीं हो सकता. I mean, आप जब रन्स भी खेल रहे हो 45 बॉल 45 रन्स, या 45 बॉल 50 रन, ऐसा नहीं हो सकता है. यू हैव टू हैव मिनिमम बॉल मैक्सिमम रन्स. स्ट्राइक रेट जबरदस्त होना चाहिए.
विराट कोहली कितना भी अच्छा शॉट मार ले, कौन था पाकिस्तानी बॉलर, दैट शॉट ऑफ द सेंचुरी अगेंस्ट हारिस रऊफ को, बट Harris Roth. आपके पास हारिस रऊफ, आपके पास वो जो डिफरेंस है स्ट्राइक रेट का वो नहीं आ रहा है। एक बड़ा स्ट्राइक रेट टॉप ऑर्डर पे चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट, प्रॉपर T20 क्रिकेट टीम आपको अगर बिल्ड करना है तो आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो चाहिए, मगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर विद अ ग्रेट स्ट्राइक रेट, विद नॉट अ नॉर्मल Hmm. स्ट्राइक रेट जहां पर आप Hmm. वैसे ही खेल रहे हैं यार, बॉल बाय बॉल खेल रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट इज वेयर वी Okay. आर माइनस, दैट इज वी आर एट द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग विराट कोहली। रोहित शर्मा शुरुआत कर दिए, यशस्वी कर दिए, ऋतुराज गायकवाड़, बट यहाँ पर आपके पास कॉम्पिटिशन है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, फिर शिवम दुबे Hmm. आते। शिवम दुबे डजंट हैव इनफ मैचेस। आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन होगा, बट आप ये भूल गए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन रिंकू सिंह का भी हो सकता है, सूर्य कुमार True. यादव का भी हो Yeah. सकता है, हार्दिक पांड्या Yeah. का भी हो सकता है। तो दिस guy is in a, he's very very far behind in the race, but he can catch up if others fail. So Shivam Dube will Okay. have to be consistent, and more than being dependent on Dhoni, how he uses, he should know how to use himself in different situations. That is where Shivam Dube counts. Otherwise, कहीं भी chance नहीं है उसका। I think that's a very, very important point, Taos. I really like that point that more than MSD, Shivam Dube should realize himself that how important it is for him to score and play really, really well in this edition. If not T20 World Cup, then perhaps any other T20 series or any other format, you'll get the reward of your hard work. But you really need to understand that this season is going to be something really very important for you. Dharmendra, a quick take on this seam all-rounder topic, in ODI World Cup 2023, we saw Hardik Pandya got a freak injury during a match. And Hardik Pandya was a really big player for Team India, And in any format, if you see in ODIs or in T20s, in both the formats, Hardik Pandya is a really very, very important player. Now, nobody knows about injuries, right? किसी को नहीं पता होता, किसी भी player को कभी भी हो सकती है. And given Hardik Pandya's history with injuries, अगर हार्दिक पांड्या किसी भी मैच में नहीं खेल पाते T20 वर्ल्ड कप में, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. उस केस में आप क्या करोगे T20 वर्ल्ड कप में? यही 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 बात मैं जैसे बात साहिल बोल रहे थे कि नो डाउट मतलब शिवम दुबे की जो हम बात अभी लगातार कर रहे हैं, शिवम दुबे को बेसिकली ग्रूम किया जा रहा था इस बेसिस पे भी कि हार्दिक अगर नहीं अवेलेबल होते हैं उनके ऑप्शन के तौर पे इनको किया जा रहा है। लेकिन ये बात जो आपके दिमाग में हर कोई यही सोच रहा है कि हर बड़े टूर्नामेंट में ऐसा हो रहा है, या जिस तरह का हार्दिक पांड्या की जो इंजरी हो रही है उसको लेकर के सिलेक्टर्स के मन में भी जरूर ये बात रहेगी कि वो टीम कैसे सिलेक्ट करें। और हम एक्चुअली मुझे लगता है ना ताउस की इस बार टीम बनाना ही बहुत मुश्किल है, इस बार सिलेक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है 15 चुनना। अभी मैं टीम आप जब हम बात कर रहे थे एक ऐसी टीम बना रहा था, आपको मैं एक और बहुत जल्दी से बताता हूँ कि मेरे नजर में जो टीम बनती है तो दिख रही है कि जो 11 प्लेइंग 11 की बात कर रहा था उसमें अगर रोहित यशस्वी अगर ओपनिंग करते हैं, विराट नंबर 3, सूर्या नंबर 4, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रिंकू हो गए, जडेजा हो गए, सुंदर हो गए, चहर हो गए, बुमराह हो गए। अब इनके हो सकते हैं कि इनके कुछ ऐसे नाम है जिनको आप ऑल्टरनेटिव के तौर पे किसी को आप ले लो, लेकिन इस पर एक्चुअली जैसे साहिल बता रहे थे कि 15 आप कैसे चुनोगे आप। मैंने ये 11 का नाम लिया है, अगर आप 4 में अगर आप शिवम दुबे को अगर लेते हो, आपके एक स्पिनर और होगा, आपके बैट्समैन आपके गायकवाड़ भी होंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार 15 चुनने के लिए सेलेक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत वो पसीने छूटने वाले हैं इनके। और ये डेफिनेटली ये होगा। मुझे लगता है साहिल की शायद जिस तरह का हार्दिक पांड्या का भी रिसेंटली जिस तरह से वो इंजर्ड रहे हैं और आगे भी क्योंकि वर्ल्ड T20 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हार गए हैं तो इस बार कम से कम T20 वर्ल्ड कप जीत लो, तो इनके लिए डू और डाई वाली जो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे यार, अब नहीं तो कब नहीं। अब रोहित शर्मा भी जानते हैं कि उनके लिए रोहित शर्मा विराट कोहली के लास्ट वर्ल्ड T20 को भी होगा ये, सो ये पूरी कोशिश करेंगे। तो टीम को बैलेंस करने के लिए ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि शिवम दुबे को इस टीम में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से मिलना चाहिए अब लेकिन मिलना तो चाहिए, लेकिन अब कहाँ किसको कहाँ माइनस करोगे प्लस करोगे बहुत डिफिकल्ट है। सो ये बात आएगी जब सिलेक्शन जब होगा तब वो नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक कहीं हो सकता है कि कहीं अगर ये एक स्पिनर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करें या कुछ अब पता नहीं क्या करेंगे। मतलब बैट्समैन में आपके पास बहुत, क्योंकि मुझे इस पर तो शेर सैयर जैसा साहिल ने बताया, शुभमन गिल के लिए भी इस पर प्लेइंग 11 जगह नहीं मिल रही है। अगर वो इस तरह से टीम अगर होगी तो शुभमन गिल को जगह नहीं बन रही। शेर सैयर तो मुझे लगता है टीम में 15 में ना हो वो। तो हालात इस तरह के हैं कि, लेकिन मुझे लगता है कि शायद
क्योंकि अगर शिवम दुबे को टीम में आप नहीं रखोगे और हार्दिक खुदा ना खास्ते अगर इंजर्ड हो गए तो फिर आपका टीम का बैलेंस वही हाल होने वाला है जो आपका। खैर इस बार तो आप इंडिया में खेल रहे थे, आपके जो 3 पेसर्स थे वो टॉप फॉर्म में थे, शमी और सिराज और बुमराह। लेकिन ये वर्ल्ड T20 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका बैकअप माइंड ये रहेगा टीम को बैलेंस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं किसी प्लेयर को एडजस्ट करके शिवम दुबे को टीम में रखेंगे, जो ऐसा 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 लग रहा है मुझे। Okay, so you find one possibility of one taking thing him to I bed. Surya, one thing, Shivam Dubey is a very good player of spin. Okay, like जो आपने लास्ट फ्यू मैचेस में देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कि ही इज कंफर्टेबल, Yeah. और जिस तरह का रीच है तो बंदा, आई मीन ही कैन स्ट्रेच एज मच एज ही कैन, but then he can hit it over the deep mid wicket or into the stands or over the top rooftop. India, West Indies में wickets are going to be slow and turning wickets. They are going to be batting wickets. They are going to be they are not going to be pacey, where a batter like a Rinku Singh or somebody who can, who was enjoying batting on Indian conditions where the ball was coming well onto the bat, or South African condition where he was punching it over the waist. यहाँ पर you have to go out of the way to perform. You have to go out of the way to get those shots. So shot making will be difficult. I mean, if you remember 2009 World Cup, was it high scoring games? They were not. West Indies में ही हुआ था. So those तो वो हाई स्कोरिंग गेम, तो यहाँ पर भी मैं वेस्ट इंडीज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ हाई स्कोरिंग गेम्स, क्योंकि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट दोस शॉट्स, टू एग्जीक्यूट दोस शॉट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइमिंग. तो यहाँ पर शिवम दुबे विल बी क्रूशियल when it comes to playing on these kind of wickets. So he has a case over there. So if he does well in Chennai kind of conditions. नो एक्चुअली आई थिंक हम वही बात कर रहे हैं ना था उसकी, ये वाला आईपीएल जो सीजन है जब शुरू होगा तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा. बट आई थिंक जैसे साहिल ने मेंशन किया कि जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड द ओल्डीज विल बी देयर इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किस किस को फिट इन करोगे. बिकॉज आपको जिस तरीके के प्लेयर्स हैं आपके पास, रिंकू सिंह है और आपने देखा था सूर्य कुमार यादव है, इन सब की तो जगह बनती है उस टीम में, तो फिर बहुत कम स्लॉट्स रह जाएंगे. But one slot that I am really very interested in knowing about is the number 3 spot in the 11, because a lot of reports are coming in around Virat Kohli. Well, there is no official confirmation and there is no official statement on any of the reports that are claiming Virat Kohli's absence or presence, this that. But एक चीज मान के चलते हैं, if not Virat Kohli, then which player? Sahil and Taos and Dharmendra, I'm just looking for one or two names. If not Kohli, then who? Surya bats at 3 for me then. Hardik plays at 4, Surya comes in at 3. Yeah. If not Virat. I'm still not buying that argument. I'm still not kind of saying that those reports are true or something, because there are no indications as far as I am concerned. He's pretty much playing the IPL. He's very much available for the IPL. Will link up with the squad soon. He'll probably play the entire tournament. And if he scores 600 runs, what are you going to tell him? What will you tell Virat Kohli? His strike rate is similar to Rohit Sharma in T20 guys. He's averaging 20 more than Rohit Sharma in as many games in T20 internationals. In the last 3-4 World Cups, at least on 3 occasions, he has been India's leading run getter in T20 World Cups. I'm just not counting the last World Cup where he played that freak innings against Pakistan. You just pick every edition. People are giving stats that go spin ko slow khelta hai, usko slow khelta hai. So be it. What made us realize that Rohit Sharma has become a T20 masterclass after that one ODI World Cup? ऐसा क्या इंटेंट हमको उस एक ODI वर्ल्ड कप में दिख गया जो हमें पिछले 5 IPL सीजन्स में नहीं दिखा है? What has been Rohit Sharma's highest aggregate in the last 5 IPLs? I'm just asking facts. All these debates when they go around Virat Kohli and Rohit Sharma. First of all, if you ask my opinion, both of them shouldn't have been in the squad. It's a young man's sport. As simple as you need fearless batters, and I would have wanted someone like Yashasvi Jaiswal opening the innings with Rituraj Gaikwad or a Shubman Gill. Ball 1, just go out swinging. Surya Kumar Yadav comes in at 3, Hardik Pandya at 4, Rishabh Pant or a keeper at 5, Rinku Singh at 6. Number 7, you have a spinning all-rounder. This is what a balanced 11 would look like for a T20 World Cup. This is something which we missed in the last 3 editions, where we kind of continued with similar approach. KL Rahul at top, Ishan Kishan at top. We were just not clear, and we're just going back to square one.
We're just going back to square one, and I'm fearing that we are kind of assembling ingredients for a recipe of disaster. We just can't afford this, boss. How many World Cups will we continue to just be also rans? Semi-final खेल लिया, final खेल लिया. Number one rankings count for nothing if you don't have a ICC trophy in your cabinet. True, That is true. what separates Australia from the rest of the world. They just become a different side when they play a final of the tournament, and that is what we don't kind of manage to do. And it's as simple. आप सिर्फ विराट का बात मत करो. Just मतलब I'm not saying आप मत करो. I'm overall. We shouldn't just talk about Virat. The problem is deeper. Rohit Sharma, great leader, brilliant captain for what he has done in the ODIs, in the Test format. But we just can't trickle that down to T20s. 3 वर्ल्ड कप के बाद हम नहीं सुधरे हैं. हमें नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इंटेंट है बॉस. प्रॉब्लम इंटेंट है. We need players who just come out there and swing their bat, which is what we saw in the last 10-12 T20s which India played. When we had young players in the squad right from top to bottom. हम 200 बना रहे थे, 180 खा भी रहे थे, बट आपको फाइटिंग स्पिरिट दिख रहा था. 5 T20s ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप देखो यार, द काइंड ऑफ क्रिकेट व्हिच वी प्लेड. And one Rohit Sharma 100 against Afghanistan, you want to tell me that he's back, he's a beast in the format? The numbers don't suggest that. It's just the strike rate is just 139. Virat's strike rate is 139, but he averages 51. Rohit Sharma averages 31 in the format. तो अब इसके अंदर मतलब क्या हम यहाँ से कान पकड़े वहां से पकड़े, प्रॉब्लम है ना. नई जगह बनता दोनों का ही नहीं बनता. मैं तो बोल रहा हूँ, I don't have any soft corner for anyone. I just want India to win the World Cup, and that is only going to happen if we have we blood the squad youngsters. Nothing to lose, no insecurity. Just go out there and express yourself. That is what we need. But it's not going to happen. हम फिर वही वाला squad लेके जाएंगे. Please go ahead. I'm sure even if Virat Kohli plays this season, I mean this World Cup, he is going to get another. He'll be the highest run getter once again. But can that help India win the World Cup? I mean, can he change the course of the game in that one particular situation, one scenario? Rohit Sharma can do. The average that Rohit Sharma carries 31. I mean, he can change the game still. I mean, you saw what he did against Afghanistan. I am not counting Afghanistan right now. Chalo, theek hai. But he has had the past record. If taking out the game from the jaws of defeat. So you have to bite the bullet somewhere exactly when it comes to taking. You have to also see the combination. How is it going? I would love to see Virat Jaiswal taking on opening with Ruturaj Gaikwad. They take on the attack. Then you have a Rohit Sharma, who was initially. I mean, if you saw the Afghanistan game, he was struggling initially, but then he caught up. I mean, he immediately went out there. He started hitting those shots. So I mean, he was learning about the conditions. So Rohit Sharma can adapt to the situation, can adapt to the conditions. He can understand. He just needs to stay on the wicket for like a couple of overs. Then he will take the game away from you with those sixes, with those long shots, because you don't have time. You don't have time in this game. 50 overs, you have enough time. You can stay there throughout. You can get 100. You can get the records, break the records. In T20 cricket, you don't have much opportunities, much chances to bounce back. So Rohit Sharma, I'm giving him a chance because already Jay Shah has declared he's going to be the captain. Now that he's declared यार ये lead करेगा तो आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं. तो आप बोल्ड स्टेप्स लो. आप नंबर 3 बोलो, चलो आपको कप्तानी करनी है, आपको हंगर है, इंटेंट है, तो आप नंबर 3 बैटिंग करो. आप वहां पर टाइम वेस्ट मत करो. आप इन बंदों को स्टार्ट लेने बोलो, आप वहां से कैरी ऑन करो. Then you have सूर्य कुमार यादव, then you have ऋषभ पंत or any wicket keeper, then you have हार्दिक पांड्या. Then look at the lineup. अच्छा, आप विराट कोहली को नंबर 3 पे डाल दियो, तो अब वो बॉल बाय बॉल, unless he changes the game in this IPL and suddenly he shows some magical instinct that आप स्ट्राइक रेट ऐसा जबरदस्त है कि he is competing with यशस्वी जायसवाल, विराट, रोहित शर्मा और मे बी ऋतुराज और सूर्य कुमार यादव. बट दैट वोंट हैपन. अच्छा, इंटेंट की बात की, इंटेंट आपका दिख रहा था रोहित शर्मा का इंग्लैंड सीरीज में, आपका इंटेंट दिख रहा था, हंगर दिख रहा था अफगानिस्तान सीरीज में. आप टेस्ट मैचेस मिस नहीं किए ना, एक पर्टिकुलर रीजन आपका हंगर दिख रहा है. सो यू आर स्टिल हंग्री. यू हैवंट वन द वर्ल्ड कप. नाउ यू वांट टू विन द T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, अब डिक्लेयर कर. यू हैव नो ऑप्शंस ना. अच्छा, ओके ताउस, आपको जाना ही पड़ेगा इनके साथ.
हाँ, तो ताउस अच्छा मान लेते हैं, अभी हमें पता तो है ही है कि रोहित शर्मा जाएँगे, विराट कोहली पे कोई कन्फर्मेशन नहीं है एंड वन्स अगेन ये बात मैंने पहले भी कही थी इस लाइव में, साहिल ने भी दोहराई थी एंड वन्स अगेन आई एम सेइंग दैट देयर हैज़न्ट बीन एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट और कन्फर्मेशन अराउंड Virat Kohli's availability or Virat Kohli's inclusion in the T20 World Cup squad. So what you're reading are just reports, are just speculations out there. There is no official confirmation, and if there'll be any confirmation, we'll definitely let you know. But what we are discussing here is कि अगर विराट कोहली नहीं 3 नंबर फॉर दैट मैटर, क्या आपके दिमाग में ऐसे नाम है जो अगर विराट कोहली नहीं होते 3 नंबर पे बैटिंग करने के लिए T20 वर्ल्ड कप में, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद बेस्ट कौन हो सकता है? आई थिंक वही जो अभी आई फुली एग्री टू व्हाट साहिल एंड तोज वाज सेइंग। अगर विराट नंबर 3 पे नहीं होते हैं, टीम में नहीं होते हैं, तो आप ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी से आपको ओपनिंग करानी चाहिए, नंबर 3 पे रोहित शर्मा को आना चाहिए। अब देखिए खेल ऐसा है कि आप आईपीएल को भूल जाओ, हम आगे की जो हम बात करें उसको भूल जाइए। आप लास्ट 2 वर्ल्ड टी20 को आप उठा करके देख लीजिए, दोनों वर्ल्ड कप में दोनों का परफॉर्मेंस सब सारे रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, लेकिन जिस तरह का हमने बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस किया है लास्ट 2 वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप में, वो हमारे पास है, उसका रिकॉर्ड है। हम अभी कह रहे हैं ना कि अब ठीक है, जय शाह ने कह दिया कि रोहित कप्तानी करेंगे, तो एक तो हुआ कि चलो आप पहले 2 स्टेप पीछे जा चुके हो, 1 स्टेप नहीं 2 स्टेप। आप हार्दिक पांड्या को टी20 के लीडर वो थे, उनको अपने पीछे कर दिया, और आप जो भी नई टीम बना रहे थे उसमें पीछे हो गए सारे हो गए, क्योंकि आपके रोहित शर्मा विराट के आने से क्या होगा कि 2 प्लेयर की जगह तो जाने वाली है। एक होंगे ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे होंगे आपके ये शुभमन गिल होंगे। ये 2 यंग प्लेयर जो आपके हैं, जो फ्यूचर हैं, वो तो पीछे की तरफ उनकी जगह नहीं बनेगी प्लेइंग 11 में जगह। और तीसरा एक और गलती एक जो होगा, मुझे बिल्कुल इसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आप इस टीम में केएल राहुल को रखोगे विकेट कीपर बैकअप के तौर पर रखोगे आप, अगर ऋषभ पंत होते हैं तब भी, और उनको खिलाने की मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ केएल राहुल को जिस तरह से बैक किया जा रहा है, वो सारी चीजों को भी टीम में होंगे वो, तो मिला जुला के फिर कहानी वही आती है कि आपके 1-2 प्लेयर वैसे होते हैं, टीम का बैलेंस बिगड़ता है। मेरे हिसाब से भी मैं यही हो रहा था कि शुरू में हम बात कर रहे थे कि यंग टीम होनी चाहिए थी, यंग टीम होनी चाहिए थी, तो इसमें रोहित और So actually, I think there's some network connection विराट from नहीं होने Tanveen. चाहिए। खैर हाँ हाँ, लेकिन कप्तान रोहित ने भी ये अपना बता दिया है कि वो विराट को टीम में चाहेंगे, तो ऑफिशियल हो या नहीं हुआ हो, लेकिन ये मानकर चलिए कि विराट भी टीम में होंगे, रोहित भी होंगे, विराट भी होंगे। सो अब ऐसे ही चलेगा, वो जब है वो रियलिटी है। लेकिन अगर विराट नहीं होते, जो आपका सवाल था, विराट नहीं होंगे तो रोहित शर्मा को नीचे आना चाहिए, क्योंकि मुझे परफेक्ट जो ओपनर अभी लग रही है T20 के स्पेशली लिहाज से, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल 2 बेस्ट ओपनर अभी हमारे लिए हैं, जो हमारे फर्स्ट चॉइस होने चाहिए, ओपनिंग के लिए होने चाहिए इस T20 वर्ल्ड कप में। But I'm really very unsure whether Rohit will be comfortable playing at number 3 or not. Rohit Sharma has been seen opening all time around, so that's one thing. Okay, that was देयर शुड बी नो ऑप्शन राइट नाउ। ये कंफर्टेबल होंगे मतलब क्या? आपको जो पोजीशन दी है वो करना है। अगर शुड कम एंड से भाई, आपको एक तो T20 वर्ल्ड कप खिला रहे बच्चों को बिठा कर, हमें एक्चुअली ये इंडिया के जीतने के लिए, रोहित के कंफर्टेबल के लिए नहीं हम वो कर रहे हैं कि हमें चाहिए वर्ल्ड ट्रॉफी चाहिए, तो नो ऑप्शन। For the record, Rohit hates batting at number 3. He has himself said exactly. at a press That's why. conference, he said, "I hate to bat at number 3." That's why I said that. But I think जो ताउस ने रिप्लाई दिया ना, वो रोहित को दिखाना चाहिए कि अरे ये क्या मतलब होता है, तुम ट्रॉफी लेकर आओ। Anyway, okay, let's quickly move to the other concern that we really need to address. हाँ. उसी के भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। See, this time Mumbai Indians, for Mumbai Indians, he will be, he can play for himself right now. He's off captaincy, he's relieved, I mean, he can play freely. So he could just go and enjoy the game. शुरुआत चलो ठीक है, मुंबई इंडियंस के लिए आप ओपनिंग कर लो, he will enjoy, he'll score runs. मैं आज लिख के दे देता हूँ, he will score runs in this IPL. Last 2 seasons I had doubts because he had captaincy, he had he was going trophyless, और 5 ट्रॉफी जीतने के बाद आप ट्रॉफीलेस जाओगे तो आपके दिमाग में अफेक्ट करने लगता है। सो दिस सीजन आई एम श्योर ही इज गोइंग टू कम आउट। और लिख के ले लो, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सीजन। राहुल भाई, पिछले 7 सीजन में सिर्फ एक बार 400 रन पार हुए हैं, वो भी 405 7 सीजन में। अरे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी 2019 ना, that was in 2019 Sahil. Yes, अभी I think in 2023 he scored what 330 400 रन, और जहां 400 रन लगे भी थे वहां पे स्ट्राइक रेट वाज 128, और लास्ट 10 सीजन के अंदर स्ट्राइक रेट
एक बार भी नहीं, 8 सीजन में स्ट्राइक रेट 135 नहीं टपा है. Just numbers. This is what numbers are saying. Yeah. So I hope And something different happens for the good. Varna, I know what's going to happen in USA. well, in 2022 edition, he scored 200 odd runs. In 23 edition, he made 332 runs, including just two half centuries. And if we have to go only by numbers, then Virat Kohli made 639 runs in 14 matches last season, including two centuries, 100 and 101, and five half centuries. So that's about numbers. But okay, quickly, I already know Taos and Sahil's answer to this question: what Team India needs in terms of wicket-keeper batter. I asked this question to them a few days back. So Dharmendra, I'll start with you. Would you love to go with KL, Dhruv, Jitesh, Rishabh, who for wicket-keeper batter place in T20 World Cup squad? डेफिनेटली देयर इज नो मुझे मैं तो फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत ही हूँ. अगर वो फिट हैं, अगर वो खेल रहे हैं, फॉर्म में Okay. आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत से बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं. और ये भी मैं साथ में जोड़ दूं कि अगर सेकंड विकेट कीपर के तौर पे कोई जाना चाहिए तो जुरेल जाने चाहिए इस टीम में. देखिए क्या है कि एक बात मैं भी फिर से बार बार इस बात को फिर से Okay. रिपीट कर रहा हूँ. आपने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, एक बार ही जीता है. वो तब जीता था जब अपने सारे सीनियर स्टार प्लेयर को आपने एक साइडलाइन किया और आपने एक नया एक्सपेरिमेंट किया. मुझे लगता है कि टाइम एक्सपेरिमेंट करने का है. अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो इस बार भी एक्सपेरिमेंट करो. मैं तो अभी भी कहूंगा ठीक है, जैसा ने अनाउंस किया है कि भाई कप्तान वही होंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इस पे रीथिंक करने की जरूरत है. आप कहो कि भैया ये यंग टीम है, तुम जाओ, तुम लोग खेलो और जीत कर आओ, वही एक चांस बनता है. अगर हम हर बार उसी ट्रैप में बार बार आते हैं कि स्टार प्लेयर आते हैं, केएल राहुल के लिए मुझे नहीं लगता है कि T20 में केएल राहुल के लिए कोई जगह है जब आपके पास ऋषभ पंत अवेलेबल हैं. आप फिर तेज शर्मा को क्यों खिला रहे हो यार? आप इतने समय से मौका दे रहे हो. इनफैक्ट मैं कहूँ ईशान किशन एनी डे बेटर ऑप्शन देन केएल राहुल. अब लेकिन जो भी जिस तरह की चीजें उनके चल रही हैं, इक्वेशन चल रहे हैं बीसीसीआई के साथ Okay. और बाकी जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं, वो अलग. आपने इसमें चूंकि ऑप्शन दिया नहीं है, तो मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन ऋषभ पंत ही होंगे, और अगर सेकंड उनके साथ किसी विकेट कीपर को जानता है, ध्रुव जुरेल को ही मौका देना चाहिए. अब जिस तरह की उन्होंने अपना टेम्परामेंट और बैटिंग दिखाई, टेस्ट में दिखाई है, लेकिन आई थिंक ही इज Okay. गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन. Okay, well, I've already heard, Tao's take on this whole topic, and he talked a lot about Dhruv Jurel. But Sahil, let's quickly sum up everything and come to this point that Dhruv Jurel, क्या वो wicket keeping batting करेंगे? Wicket, like, will he keep wickets? Given RR में बहुत सारे options है. Sanju Samson first, then KL Rahul, I want to really know from you, will he be batting middle order? And if middle order, अगर वो अपने 2016 की फॉर्म में आते हैं, जहां पर आई थिंक इन 2016 ओनली ही बैटेड इन द मिडिल ऑर्डर, क्या वो उस फॉर्म में आते हैं, तो क्या उस बेसिस पे उन्हें T20 वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर बैटर चांस मिलेगा? और ये जो जितने भी नाम है, ऋषभ पंत इज वन पर्सन जिसके बारे में आपको इतना नहीं पता वो किस तरीके से आकर खेलेंगे. नोबडी नोज अ थिंग, और ऑब्वियसली नोबडी शुड इवन जज हिम वेरी sternly or harshly कि वो किस तरीके से इस सीजन में परफॉर्मेंस देंगे. But then there is only one name that I can see, Jitesh Sharma. In past IPL seasons, what he has done, he has made his place for the wicket keeper batter position. So given all these details and informations, do you think कि KL Rahul और ऋषभ पंत को ले जाना ठीक रहेगा in terms of जितेश शर्मा जिन्होंने इतना कुछ किया है? लोग जाएंगे कि नहीं ये तो कहना बहुत जल्दी है अभी, पर जाना चाहिए कि नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं तो दोनों का बोलूंगा, केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों. क्योंकि आपको जब तक स्क्वाड अनाउंस करना है, आपको आईपीएल के सिर्फ 5 या 6 मैचेस ही मिलने हैं. कोई ऐसा पूरा Exactly. टूर्नामेंट का विंडो यू वोंट हैव. यू विल हैव ऑप्शन टू काइंड ऑफ मेक ट्वीक्स टू द प्रोविजनल स्क्वाड व्हिच यू हैव नेम्ड, बट मोटा मोटी आपको 20 नाम तो देने ही पड़ेंगे या फिगर आउट करने पड़ेंगे. By the time 1/3 of the tournament is done, you should have a fair idea about that. So on the basis of 4-5 IPL games, if you pick Rishabh Pant, it's going to be a lottery. And on the basis of same sample size, अगर आप कहोगे KL Rahul will kind of ease into that middle order role, I have my doubts. I don't really want that to happen. And Dhruv Jurel, even if he doesn't keep, I think we have seen his keeping enough in the red ball format कि अब उसकी keeping तो देखने की जरूरत नहीं है हमको यार. white ball के अंदर Exactly. आपको ऐसे भी स्ट्रीट स्मार्टनेस ज्यादा चाहिए. बेसिक्स तो इतने नहीं मैटर करते. You just need to be an effective keeper. And Jurel he's a bloody good keeper यार. There are no doubts about it. The way he kept in those matches against Ashwin, Jadeja and Kuldeep, it was no ordinary feat to achieve. पहले गेम में आपको थोड़ा वो कॉन्फिडेंस में लो लगा था क्योंकि डेब्यू था, but after that he was very very confident. So Dhruv Jurel,
I hope Rajasthan Royals bat him over Riyan Parag, because मैं repeatedly यही बोल रहा हूँ कि he needs at least 25-30 balls every game, Dhruv Jurel, and this is a franchise's opportunity of making a player available for India selection, kind of knock that door. True. You just play him at the right True. spot, and he's definitely going to cause another happy headache to the selectors. Yeah. So No, Dhruv that's right. Jurel, Dhruv and Jitesh would be my preferred options, but I know Okay. there'll be a KL who will be preferred as a backup. I know. I think KL Rahul should focus on getting LSG trophy rather than thinking about the World Cup. तो वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करो, But आप वहां पर Sahil, रन बनाओ. but Sahil, will we see T20 KL Rahul batting in the middle order? That's what he has communicated to the franchise. उसने कम्युनिकेट क्या Oh, करना है यार, कप्तान है, उसने किसको बताना है, उसने पैड डाल के बस बैठ जाना है कि मैं 4 पे जाऊंगा. और साहिल अच्छा, साहिल एक और बात और है, गौतम गंभीर भी नहीं आप है देखना काउंटर करने के के लिए. राहुल वर्ल्ड कप में आने के लिए वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, इसमें वही रहेंगे, अब विकेट कीपिंग करेंगे, उनको चांस बनाने हैं, उनको फिट अब करना है आप इस टीम में. आप हर्ष तिवारी का कमेंट देख लीजिए कि अगर MS धोनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको ही ले सही लें. कह रहे हैं भाई, I think बिल्कुल सही कह रहा है. हमने अपना मजाक बना रखा है, कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है. जो प्लेयर्स हमारे 2007 T20 वर्ल्ड कप खेले थे वो 2024 में भी खेलेंगे. मतलब हमने तो मजाक ही बना रखा है ना. तो आईपीएल का फायदा क्या है, जो हम 17 एडिशन से 16-17 साल से हम आईपीएल कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है जब ऐसा डेयरिंगनेस But दिखता ही नहीं. you cannot take away the right from a particular player for contesting for that particular position in Indian team. So KL Rahul is in his rights to do whatever he wants. But Absolutely. KL छोड़ो, LSG, मैं तो कह रहा हूँ विराट एंड रोहित आर well within their rights to kind of have absolutely, that absolutely, desire burning in them to play T20 World Cup. absolutely. The call has to be taken by the board and the selectors what they really want out of the squad. exactly. Yeah. And that's the most important thing. And the other day we were just talking about how bold calls were made during India England test series, how youngsters were given chances, but it is to be seen how long that will continue. We are just waiting whether that will continue for the T20 World Cup or not, and that's the big question. Well, we'll quickly move to two other topics here. First one is death over. Who will be the hitters in those crucial overs, the 18th over, 19th, and the final over? Dharmendra, Taus, and Sahil would request you to just take one name, and we'll go to the next one and then take questions from our viewers. So, Dharmendra, Rinku Singh and if Jitesh is there, then definitely Jitesh. अदरवाइज अगर Okay. मैं फिर मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है somehow आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द ध्रुव जुरैल. वो somehow आप देखना, जैसे बातें जो हो रही है ना कि वो धोनी की जगह लेंगे शायद, जो भी जिस तरह की बातें अगर हो रही है, सिर्फ विकेट कीपिंग स्किल्स हमने उनकी देख ली है, उनकी बैटिंग Yeah, स्किल्स में भी देख ली, उनका टेम्परामेंट भी देख लिया है, और मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में भी वो देखना, आप इस फॉर्मेट में भी काफी अच्छा वो करेंगे. तो Okay. अदर यही दोनों में से जो भी अगर टीम में अगर होते हैं, ध्रुव जुरैल या जितेश शर्मा, उनको मैं देखता हूँ इसमें उनके रिंकू सिंह के साथ हिट करते हुए. Okay, Sahil. Dhruv Jurel. Okay, Taus. Okay, if it's a T20, if it's a 20 ये member squad, I would prefer Shivam Dube यार. I mean, अगर विकेट कीपर बैट्समैन की बात नहीं कर रहे तो for me विकेट कीपर बैट्समैन ध्रुव जुरैल. और 15 मेंबर हुआ तो 15 मेंबर में वो देखेंगे तब, अभी तो आने तो दो टाइम. अभी फिलहाल शिवम दुबे. और 11 में और 11 में तो बता दो आप, अगर रिंकू सिंह को आप नहीं रखते हो तो रिंकू सिंह की जगह कौन? नहीं, रिंकू सिंह को रखूंगा मैं. He's too good a player and a fielder. यार. No, See, if not, I'm just asking for just one single name. शिवम दुबे. Okay, well, Taus said Shivam Dube. We have Dhruv Jurel and Jitesh Sharma also Dharmendra talked about. So वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा IPL 2024 में देखना कि कौन से वो हिटर्स है जो अच्छा परफॉर्म करेंगे and they can make a spot of their own in T20 World Cup as well. With that, let's also go to the backup options, and that's the last one here. Backup options के लिए सबसे best backup options कौन रहेंगे, साहिल? You need a top order backup batter. I was just looking at the squad which we took for 2022 World Cup. So you had 4 fast bowlers. You had a backup all rounder in Deepak Hooda. You had Ravichandran Ashwin. You had Bishnoi. You had Akshar Patel as the spinner. You had Bhuvi, Arshdeep, Shami as the 3 seamers.
and of course you had Hardik Pandya. So उस लिहाज से आपको एक टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए, तो my top order batter would be Shubman Gill or Ruturaj Gaikwad as one backup. Then I'll have one spin all-rounder backup, which would be either Akshar Patel or Washington Sundar, depending आप किसको कहाँ पे खिलाते हो. और फिर आपको 2 fast bowlers, 1 keeper and 2 more fast bowlers. Yeah, so those would be my backups. And in fast bowlers, I would have Arshdeep and Bumrah play all my games. As backup, I would have a Siraj. I hope Akashdeep does well because he has pace और थोड़ा मतलब है फायर है उसके अंदर. और आवेश का एक ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मैं नाम एकदम भूल गया और धर्मेंद्र रिमाइंडेड मी. सो आवेश इज अनदर नेम because he's playing for a new team. He's playing for Rajasthan Royals. I hope the new team works wonders for him because Rajasthan Royals don't have Prasidh Krishna now. So Avesh is going to play almost every game for them. Okay. But meanwhile, Ravi Shankar is saying for him the backup options will be Shubman Gill, Tilak Verma, Ravi Bishnoi, and Mukesh. Tilak nahi jayega. Yeah. Dharmendra, your backup options? ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं है कि बैकअप ऑप्शन में वही ऋतुराज गायकवाड़ होंगे और टॉप ऑर्डर में और स्पिनर में वही मुझे लगता है कि कुलदीप. अब एक बात पर हमने चर्चा के मिस किया है. मुझे लगता है कुलदीप यादव इस उसमें 15 में होने चाहिए क्योंकि काइंड ऑफ नाम ही मिस हो गया उसका. वेरी वैलिड पॉइंट. कुलदीप यादव को मैं तो बैकअप में नहीं बल्कि वहां रखना चाहूंगा उनको मैं. हाँ, स्पिनर में आप बिश्नोई को, आप उनके रवि बिश्नोई को बैकअप आप बिश्नोई में रख सकते हैं. हाँ, बिश्नोई को रखेंगे. फास्ट बॉलर में दीपक चहर भी अगर दीपक चहर इन नहीं होते हैं किसी वजह से, अगर वो नहीं होता तो उनको रखेंगे. और शिवम दुबे बैकअप होंगे. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पे शिवम दुबे होंगे. ओके. ताउस ऑलराउंडर धर्मेंद्र जी ऑलराउंडर वो बॉलिंग करते ही नहीं ना शिवम दुबे. हार्डली ही गेट्स टू बॉल और धोनी तो देंगे ही नहीं, तो आप बैकअप में आप रख ही नहीं सकते इसको. एनीवे ठीक है, एक्स्ट्रा ऑप्शन करके आ जाएंगे बॉलिंग में. या सो फॉर मी लाइक मैंने सोचा नहीं है क्योंकि मैंने पूरा फोकस ही रखा है. बट या शिवम दुबे पे रखा है. शिवम दुबे पे रखा है. अक्षर पटेल I would love to have Akshar Patel in my squad यार. What a batsman यार. What a batsman. I'm not talking, see left arm spinner है बंदा और वो T20 में effective रहेगा क्योंकि turning track तो रहेगा, but then you won't straight away get into the side because of Ravindra Jadeja. So you can't have two left arm spinner. फिर आपके पास स्पिनर में और कौन है? अच्छा चलो, फास्ट बॉलर दीपक चाहर ऑफ कोर्स. आवेश खान I don't enjoy watching him. I don't know why. उसको वैरायटी नहीं है बंदे के पास. शार्दुल ठाकुर is one guy. T20 you need a lot of variety. T20 you need a lot of variety. You need to vary your lengths. You need to vary your with your fingers. You need to play around. So yeah, Shardul Thakur will be there for me. Fast bowling. This guy. All-rounder. Fast bowling all-rounder का तो. Shardul Thakur, fast bowling all-rounder and हार्दिक का बैकअप. हार्दिक मेन है यार. हार्दिक तो मेन रहेगा. हार्दिक का बैकअप. शार्दुल है. अच्छा, तो you mentioned शार्दुल and then you mentioned अक्षर. विकेट कीपर बैटर के लिए जितेश. ओके, ठीक है. आई थिंक मोर सो हमने सारे चीजें कवर कर ही ली है. सो नाउ वील क्विकली मूव टू आवर रैपिड फायर राउंड because we're getting a lot of questions. We'll request our panelists to make it quick and let's begin. First one's from Harsh Tiwari. Any chances for Umran Malik? Sahil? No. Okay. Priyanshu's asking about Virat Kohli's status, and he said that all the stories, all the reports that are coming in seems planned. So what's your take on Virat Kohli's availability for T20 World Cup, or will he be there in the squad? I think for me he's not ruled out yet. So I met a lot of BCCI office bearers after the Dharamshala test and I was told that he's very much in the scheme of things. He'll play the IPL. So he's very much in the scheme of things as far as I am concerned. Right now there has been no abhi, like he has been on a personal break, boss. अभी मतलब उससे क्या कोई बात करेगा, कहाँ से किसी को कुछ मूड गेज होगा उसका. Let him come and play the IPL first. और 550-600 रन लगेंगे ना 150 के स्ट्राइक रेट पे, तो फिर तब गेम सेट मैच होगा तो फिर क्या करेंगे. अरे बट साहिल भाई, see एक clarity on the, I mean why there is so much confusion. I mean directly why can't we, Virat Kohli is just another player.
I mean, you can't keep on having that stature है, बंदे ने runs बनाए. यार अभी True. आपको क्लियर एक क्लैरिटी लेके चलना है. मुझे पता नहीं why are they hesitant कि यार हाँ जब विराट आएगा तब कम्युनिकेट करेगा तब हम जाएंगे. तो जरा बोलो कि you're Same there, no, you're not there. Rahul. Same no. They've shot themselves in the foot by having Rohit as captain. So if you bring Rohit, अगर आएंगे तो करण अर्जुन दोनों आएंगे ना, क्योंकि आप एक को खिला के दूसरे को कैसे बिठाओगे? True. मतलब मैं तो डे वन से वही बोल रहा हूँ. और इसमें करण अर्जुन के साथ एक तीसरा सिपाही और तैयार है, केएल राहुल. ये आते हैं तो तीनों तिगड़म में आते हैं. तो नहीं, मतलब but आप जो लॉजिक से आप रोहित को लेके आए हो, आप इमोशंस के साथ जा रहे हो वर्ल्ड कप, तो फिर आप जीत कैसे सकते हो यार? मैं तो कह रहा हूँ वो जो यही अनाउंसमेंट तो प्रॉब्लम है। रोहित को कैप्टन बनाने का अनाउंसमेंट था, वही सबसे बड़ा इमोशंस में गए थे हम. वरना रोहित का वो मतलब आई डिड नॉट सी एनी लॉजिक इन दैट. हार्दिक शुड हैव बीन कैप्टन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. ओके हाँ वो एक्चुअली हमारी इस पर काफी ज्यादा बातचीत भी हुई थी, हमने लाइव शोज में काफी ज्यादा डिस्कस भी किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो दैट रोहित शर्मा विल बी देयर फॉर द T20 वर्ल्ड कप. हर्ष तिवारी पूछ रहे हैं दैट मैचेस विल हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम, तो क्या हमें चाहिए सीम बॉलर्स, स्विंग बॉलर्स? ताउस नया बॉल कौन ऑपरेट करेगा? आई मीन या यू नीड फास्ट बॉलर एटलीस्ट टू गेट अ गुड स्टार्ट. बुमराह अगेन, Arshdeep, then that's enough. I mean, 2 fast bowlers are enough. Then spinners will come into play. So if you have Jadeja, he's almost like a 100 की स्पीड पे तो डाल ही लेता है. तो he's the third option. 2 bowlers are enough. Okay. Now we have this one from Priyanshu that guys, write off Virat at your own risk. If West Indies, if the pitches are of 160, 70 types, Virat becomes a real asset. He has the best run chasing ability. Both Rohit and Kohli should be out. Okay, ये दो बहुत अलग अलग चीजें प्रियांशु ने यहाँ पर लिंक कर दी है. हम पहली चीज पर फोकस करते हैं. धर्मेंद्र, जैसा प्रियांशु कह रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो उन्होंने 22 में किया था, जिस तरीके की उन्होंने नॉक खेली थी, और जिस तरीके की विराट कोहली बैटर है, लास्ट IPL सीजन में भी जिस तरीके से उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई थी, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या विराट कोहली को रखना चाहिए टीम में या नहीं? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इस टीम का सिलेक्शन इस बेसिस पे होना चाहिए कि आप विराट, रोहित और केएल राहुल के ऊपर सोच करके आप टीम बनाओ, जो भी एक यंग टीम भेजो आप. लेकिन खैर तो होना है नहीं वो करके, तो मुझे नहीं लगता. और जिस तरह से देखिए, मैं विराट की क्रेडिबिलिटी और उनकी चीजों को नहीं वो कर रहा, लेकिन जिस तरह से कुछ समय से विराट बैटिंग भी कर रहे हैं, वो T20 वाली बैटिंग है भी नहीं. आप ODI वर्ल्ड कप का देख लो, रन तो उन्होंने बहुत बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा है? अब जो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को ना, रुक कर खेलते हैं, वो टाइम लेते हैं. अब वो विराट का वो गेम नहीं रहा कि आकर वो रन बनाएंगे. तो आपके पास जब इतने अच्छे प्लेयर आपके जो सेट हो चुके हैं, जिन यंगस्टर को आपने इतना टाइम मौका दिया खेलने को और वो अच्छा खेल रहे हैं, उनको इग्नोर करके फिर से विराट कोहली को ला करके तो आप अपना स्टेप पीछे करो. तो मेरी नजर में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है. जैसा साहिल ने भी बताया कि वो ये टीम का तो बनेगा ही बनेगा, बाकी जिसका कटना है वो कटे. आप ये देखिए, मैं बार बार इस बात बोल रहा हूँ, एक अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी आपका ईशान किशन ऐसे कंट्रोवर्सी में घुसा करे, उसका करियर ऑलमोस्ट मुझे लगता है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से किसी तरह से ईशान किशन कैसे वापसी क्या हो गया, गॉड नोज. कम से कम अब राहुल द्रविड़ के कोच रहते हुए या जो इस तरह का सेटअप है उसमें उनकी वापसी बहुत मुश्किल लग रही है. तो अब इस तरह की जब चीजें हो रही है, इमोशन के साथ आप जा रहे हो, तो फिर तो वाली बात होगी. लेकिन मेरे हिसाब से विराट कोहली को वर्ल्ड T20 में नहीं जाना चाहिए. Yeah, well, I think we have discussed a lot about Virat Kohli in this live today. So let's just, okay, I think we have discussed this, but once again, Sahil, I remember in that Rajkot test, it was said that, they'll tell later about Virat Kohli. I'll give him an update also on this. Mr. Ravi Shankar Kumar, he clearly said we'll decide about Virat Kohli later, because that was the time when they were just talking about Rohit the captain, Hardik the vice captain, Rahul Dravid the coach. That is what they confirmed. अब उस टाइम पे आप जयशा को पूछोगे, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? जयशा आपके आगे 15 उतार के दे देगा. That's not his job, right? We asked him for an update on Virat, so he said, yeah, we'll address that later. That is what he said. I don't know why that statement is being twisted into suggesting the fact that they are not interested in Virat Kohli, but he clearly just said that we'll see that later, because we asked him about certain issues, he addressed them, he spoke about that. He's not going to name the 15 for us, right? That's Ajit Agarkar's job, and that is what Agarkar is going to do. So Jay Shah was just talking about Rohit Sharma the captain, Hardik the vice captain, coach Rahul Dravid. After the Dharamshala test, we met more office bearers and we were told that Virat is very much in the scheme of things. So I don't know why we are connecting two dots which are completely unrelated to each other.
That is my kind of take and response to Mr. Ravi Shankar Kumar. Okay. We have another comment from Priyanshu. Don't even need the okay. We don't need any debate around the wicket keeper spot. Dravid sir will pick KL Rahul. I think we have discussed this also. Priyanshu, हमने बहुत ज़्यादा बात करी है और KL Rahul होंगे स्क्वाड में नहीं होंगे इस पर काफी डिस्कशन हुआ है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए आपको सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स वहां पे मिल जाएंगे. Now I have an interesting comment and that's from I found this one. Okay, Harsh is saying we need a hitter like Jake Fraser McGurk in the Australia West Indies ODI. We saw what he did. He's been signed by Delhi Capitals now, and he will be joining the team in place of Lungi Ngedi as he's been ruled out of the upcoming IPL season. I also saw him. He played really well for Dubai Capitals in ILT20, and he's one name who's like a very great emerging talent, Sahil, in T20 format. Just 21-year-old Jake. Would you have to say? I'm not just talking about do we need such kind of a batter or not. I'm just talking about the batter. That Delhi Capitals has signed him. I when I looked at the auction shortlist, I saw his name. I googled him. Then Tausbhai knows, Bharat Sundaresan, our former colleague. He's in Australia right now. So I messaged him asking about him. मैं कहा लड़का कैसा है? तो उसका reply है अच्छा है यार. मेरे को I still remember that conversation when he wasn't picked up in the initial auction thing, but now he has been signed up as a replacement. But again, I don't really get too excited about these overseas players because we have seen Harry Brook and all in सबका क्या हुआ जब पहला साल IPL हुआ. IPL is a different beast यार. मतलब बिग बैश में जाके जितना मर्जी धागा खोल दो, यहाँ रन करना उस एटमॉस्फेयर के अंदर इतना प्रेशर, पैक्ड हाउसेस, पैक्ड स्टेडियम, स्लो एंड लो पिचेस, द बॉल डजंट कम नाइसली ऑनटू द बैट. फर्स्ट इनिंग्स में अलग चलता है, सेकंड इनिंग्स में ड्यू के बाद बैटिंग और आसान हो जाता है. सो जेक फ्रेजर मैकगर्क, यू रियली नीड टू प्रूव योरसेल्फ इन द IPL. Definitely. Right now I'm watching his batting on YouTube shorts में. यार जो विकेट्स पे बैटिंग किया है ना बंदे ने, करेक्ट, सिर्फ मूवमेंट नहीं चाहिए आपको, फीट मूवमेंट नहीं, आपको सिर्फ बैलेंस, आपने सिर्फ बैट थ्रो किया यहाँ वहाँ. और द बेस्ट पार्ट इज he's got good timing. बट यहाँ पर वो टीम इंडिया के लिए वी नीड अ पिंच हिटर, मतलब ही इज सेइंग वी नीड अ बैटर लाइक हिम. तो हमारे पास है इनफ है यार. वी हैव गॉट गुड और बैटर्स हु कैन बैट लाइक हिम, हु कैन बी एज क्विक. आई मीन लुक एट यशस्वी जायसवाल यार, ही स्कोर्स फास्ट. अभी इंग्लैंड सीरीज के बाद तो उसका माइंडसेट पूरा ही चेंज हो जाएगा. ही इज गोइंग टू बी सुपर हाई ऑन कॉन्फिडेंस. तो आप तो वेस्ट इंडीज यू डोंट नीड पीपल हु स्टे ऑन द विकेट और खाली बैट इधर उधर थ्रो करे, बिकॉज द विकेट्स आर स्लो. आई मीन अगेन आई एम सेइंग इट्स गोट टू बी स्लो एंड टर्निंग. So you need good feet movement और बैट को खाली इधर उधर घुमाना नहीं, you have to work around also. तो मतलब we have sorted players out there right now. No, that's right. And Harry Brook नहीं है तो उन्होंने Jake Fraser McGurk को लेके तो रखा है, but we'll have to see. I completely agree to what Sahil said. These overseas players, it all seems really good when you look at their numbers, but it all comes to the point whether they'll be able to perform in IPL or not. We saw what happened with Harry Brook. Just one century came off his bat last season, and nothing well worked with him. This season he's not there for the IPL because of personal reasons that we all know. But we'll see what happen with Jake. एक और प्लेयर आया था डार्सी शॉट, याद है अगर आपको, लेफ्ट हैंडर. ही वाज लाइक हाइप्ड अबाउट बिग बुक बैश में. क्या हो गया था इंडिया में? आई लव दैट प्लेयर, बट इंडिया में वो एक्सपोज हो गया था. अलग है, यहाँ समझते नहीं लोग, कैरिड अवे हो जाते हैं. Sahil, would request a quick take on this one, and then I have a very interesting question. I kind of did flash this comment because Jay Shah never said that Rishabh is going to play the T20 World Cup. There were only 4 journalists present with him. I was one of them. Network 18 Group Sports editor K. Srinivas Rao was the other one. There were 2 more journalists and 2 more joined later. 5 से 6 लोग थे. पता नहीं है कहाँ वर्जन लोग सुनते हैं. धर्मशाला टेस्ट के बाद बात हुआ था, वहाँ पे क्लियरली बोला गया था ऋषभ पंत, if he's available, if he's keeping well, he'll be an asset for us if he plays the T20 World Cup. ये नहीं बोला था कि वो खेलने वाला है. वो सिर्फ एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा था. उसके अंदर लोग ने मतलब I don't know why statements are twisted and all that. Please read CricketNext for exact version. We quoted him as it is. No तड़का, no मसाला. सादी सूखी खिचड़ी खिलाते हैं यार हम. नहीं वो करते. Okay.
This one's from Ashwin Pojak. Jitesh Sharma, one of wicket keepers, if not Pant. Jurel shows up middle order with Hardik and Rinku for power hitting. Okay, Ashwin, हमने इसी पर काफी बात करी और जितेश शर्मा was one of the names we found as best fit for that wicket keeper batter position. But as we are ending this live session, I have an interesting question for Sahil, and we'll end up with that. Priyanshu is asking the biggest question around T20 World Cup: when Mr. Rahul Dravid's gonna go to Adelaide to study dropping pitches? Priyanshu, unfortunately, we are not the host nation, so we just can't decide what's happening with the pitches. So thankfully, वहाँ हम बच गए हैं. And drop in pitch है उसके अंदर कोई चाह कर भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता. The work has already begun near the New York venue, and there's not much Mr. Dravid can do right now. So all he can hope is the wicket is to his liking, but अभी कोई tinkering doctoring नहीं हो सकता because the hosts are West Indies and USA, not India. Well, that's right. But I think, your reports that generally come up with, what's Rahul Dravid doing around the pitches, that's really loved by our viewers because they really want to know what's Rahul Dravid doing with the pitches and is he doing something? Is he studying something? So that's very interesting. Well, thank you so much, Sahil, Taus, and Dharmendra for joining with me. Had a fun chat, around IPL and T20 World Cup. Looking forward to more such conversations. Thanks a lot. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.